Hello everyone, welcome back to your own channel Study with Alka Kandwal. How are you all? I hope everyone is great, doing positive and preparing well for the exams. For those who are new to the channel, let me introduce myself. I am Alka Kandwal and the channel is an educational channel wherein we talk about computer as a subject for all the competitive exams, wherein computer is a very important section. Then we talk about our focus, that is PGT and TGT computer science, and in between we keep on taking up interesting mathematics topic. So today is one of it, and today we will be talking about rational numbers. We have already started with the chapter and we will just continue and finish off with the chapter today. So those who have not yet liked, shared and subscribed, make sure you're liking it, sharing it and subscribing it. Just subscribe the channel and click on that bell notification so that as and when the video is uploaded, you just get notified that okay, this is the video. So yes, तो ये आपको करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आई होप कि सबको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। हमने रैशनल नंबर्स के बारे में बात किया था। रैशनल नंबर्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जो पी और क्यू है वो इंटीजर्स हो सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये हमने डिटेल में बात किया था और रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल क्यू। तो जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज हैं, हमने पहले भी जो ऑलरेडी नो इंटीजर्स की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, होल नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो रैशनल नंबर्स की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट एडिशन। तो इफ वी कंसिडर ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर्स, ठीक है, ए एंड बी टू रैशनल नंबर्स, तो जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, a प्लस बी करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा। इट विल बिलोंग टू द रैशनल नंबर ओनली। व्हेन यू आर सब्ट्रैक्टिंग टू रैशनल नंबर्स, देन आल्सो इट विल बी अ रैशनल नंबर। इज इट फाइन? जब हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू कैन टेक एनी एग्जांपल आल्सो, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर, इट इज आल्सो अ रैशनल, द रिजल्ट इज आल्सो अ रैशनल नंबर। बट when it comes to division, the result might be or might not be a rational number, might be, जैसे कि अगर मैंने बोला कि 2/5 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका मतलब क्या है, 2/5 इंटू 1/2 कर सकती हूँ मैं, तो 2 कैंसिल, 1/5, तो ये रिजल्ट तो रैशनल नंबर आ गया। मगर अगर मैंने बोल दिया कि 2/5 डिवाइडेड बाई 0, सो द डिनोमिनेटर विल कंटेन 0, तो डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता। इन द डेफिनेशन ओनली वी हैव लर्न, because of this exceptional situation where the denominator might be 0, that is why we say that only addition, subtraction and multiplication follows the closure property. डिवीजन फॉलो नहीं करता है। और एक और बात याद रख लो, यहाँ पे डिवीजन थोड़ा लेजी ऑपरेटर है। तो लेजी है तो वो जितनी भी प्रॉपर्टी हम बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में, कम्यूटेटिव, एसोसिएटेड, डिस्ट्रीब्यूटिव, वो कोई भी फॉलो नहीं करता है, तो बहुत लेजी है। So this way you can remember it, okay? So when we are adding two rational numbers, the result is a rational number. Subtracting two rational numbers, the result is a rational number. Multiplying, yes, it is a rational number. So that is the number one property. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और क्या प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर के बारे में। So here we go to the next property, that is the commutative property. Yes, the commutative property. So let us move ahead, and here we go to the commute. Just hold on. Let us talk about commutative property. Commutative is very easy. तो आप लोग याद रखना, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ये दोनों फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो ये डिवीजन था उसने सब्ट्रैक्शन को भी लेजी बना दिया। Yes, and what do we understand by commutative?
that A plus B will be equal to B plus A. So that is one property, and the other one is A multiplied by B is equal to B multiplied by A. So you can take two rational numbers. या तो आप लोग ऐसे ऐड करो कि 1/5 प्लस 3/5, तो आंसर क्या आएगा 4/5. अगर हमने 3/5 प्लस 1/5 किया तभी भी रिजल्ट 4/5 है. So the order does not matter, like 2 plus 5 7, 5 plus 2 7. So whenever we add in any order, the result is definitely going to be the same. वैसे ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a मल्टीप्लाइड बाय b करो या b मल्टीप्लाइड बाय a करो तो हमारा रिजल्ट सेम आएगा. So that is the logic. Is it fine? So moving ahead, let us talk about associative property. Now these two, addition and multiplication, are very active. So addition or multiplication, again they follow the associative property. Subtraction and division does not. What does this mean? अगर हमने a plus b plus c किया या हमने a plus b पहले किया, you already know ना कि we solve the bracket part first. तो अगर हमने b plus c को पहले ऐड किया फिर a को ऐड किया, या हमने a plus b को पहले ऐड किया फिर c को ऐड किया, तो रिजल्ट सेम रहेगा. The bracket is in the b plus c part or a plus b part, and then we are adding c or then we are adding a, the result b is the same. Similarly, a multiplied by b multiplied by c will be equal to a multiplied by b multiplied by c. So that is the associative property. Very easy. So for example, I said 2 multiplied by 3 into 5. Now first we will do the bracket part. 3 5s are 15, 15 into 2 30. Now for example, I say 2 into 3 into 5. So we will have 2 3 just 6, 6 into 5 30. तो result तो same है. तो ब्रैकेट या पहले के दो वैल्यूज में लगाओ या बाद के उसमें, so the answer will remain the same. But in the subtraction and division it will not hold. Different values आएंगे. Yes, so that is the different properties, and then we talk about another property, that is the distributive property. Distributive property. So there are two properties here. Distributive property of multiplication over addition. तो मतलब अगर a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c ब्रैकेट में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय c. अगर हमारा a प्लस a okay, again if distribution of multiplication over subtraction, so we can write a multiplied by b minus a multiplied by c. When we open the bracket, it's the same thing. For example, I say 2 multiplied by 5 plus 3. So I can solve it like this also. 2 multiplied by 5 plus 2 multiplied by 3. 2 5s are 10 plus 3 2 is 6, 10 plus 6 is 16. और अगर ऐसे solve करो 5 plus 3 8, 8 into 2 16. So when you open 2 into 5 plus 2 into 3, that is the distributive property. Distribution of multiplication over addition, distribution of multiplication over subtraction. So these are the two properties. So moving ahead, let us move ahead. Are you all ready for it? Is it not? I hope this much is clear to everyone out there, everyone of the champ out there. Yes, properties हो गई. रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन हो गया, बहुत इजी था. जिसने अभी तक नहीं देखा वो पहले का, इससे पहले वाला सेशन देख लेना. सो दैट वाज अ वेरी इजी थिंग, इजी पीजी थिंग. अब एक और चीज है कि क्वेश्चन आता है कि फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. Rational numbers to find rational numbers between two rational numbers. Okay, there are two methods. Two methods are there, rational numbers. ठीक है. So देखो, एक में है, for example, the question says that in between 1/5 and 1/2, we need to find the rational number. अब हम क्या करेंगे? Let us take out the LCM. 5 and 2 का LCM कितना आएगा? 10. अब हम दोनों का डिनोमिनेटर 10 बना देते हैं. तो अगर हमको 1/5 का डिनोमिनेटर 10 बनाना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 2 इन द डिनोमिनेटर, सो दिस बिकम्स 10. अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ऑब्वियसली द सेम स्टेप हैज टू बी डन इन द न्यूमरेटर आल्सो. 1 into 2 2/10. तो 1/5 हमारा क्या बन गया? 2/10. ठीक है. अब हमारा 1/2 को हमको 10 डिनोमिनेटर बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा. तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 5 करो तो ये आ गया 5/10. तो अब बता,
कि what is the rational number between 2 by 10, 5 by 10? You can write 3 by 10. You can write 4 by 3, 2 by 10, 3 by 10, sorry, 4 by 10. ये तो rational number आ गया. अभी दो आए. अगर हम लोगों को, अगर आप लोग लिखेंगे 2.5 by 10, 3.5 by 10, that is also okay. But other way क्या है कि अगर हमारा 10 है तो इसका रेंज थोड़ा और बढ़ा देते हैं. Let us make it a 50. Now, for example, I want to make the value 2 by 10 as 50 in the denominator. Into 5 कर दो, into 5. तो ये हो गया 10 by 50. और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 by 10 into 5 into 5. है ना, 50 आ गया, 5 5 is 25. See, now you get 11 by 50, 12 by 50, 13 by 50, 14 by 50, 15, 16 by 20, 50, 17 by 50, 18 by 50. तो इतने रैशनल नंबर्स आ गए. तो अगर आपने रेंज बढ़ाते रहे, फॉर एग्जाम्पल दे आर आस्किंग फॉर 10, तो ऐसे कर दिया हम लोगों ने. इज इट फाइन? फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम, वी मेक द डिनोमिनेटर सेम, वी से दैट अच्छा यहाँ तो दो ही मिल रहे हैं तो हम और भी रेंज बढ़ा देते हैं. सो दिस इज द वे in which one way, the first way. Is it clear, everyone? So what did we do? 1 by 5 and 1 by 2. Just see once again, 1 by 5 and 1 by 2. तो इसको हमने into 2, इसमें into 5 कर दिया. तो ये हो गया 2 by 10, ये हो गया 5 by 10. अब इनके बीच में अगर बोला कि find one rational number, तो हमारा टास्क हो गया है. अगर बोला कि 10 रैशनल नंबर है तो हम इसका रेंज बढ़ा देंगे. जस्ट लेट अस डू 10 5s into 5 into 10 5s 5 5s, then 2 5s 10, 10 5s 50. ये हो गया 25 by 50. तो 11 by 50, 12 by 50, 13 by 50, 14 by 50, ये सारे रैशनल नंबर्स हो गए इन दोनों के बीच में. अब जो दूसरा मेथड है, लेट अस सी द other method, 1 by 5 and 1 by 2. So these are the two numbers. We have to find a rational number between these numbers. That is, let us find the mid value. Mid value निकालो इन दोनों के बीच में. So 1 by 2 and add these two. 1 by 2 into 1 by 5 plus 1 by 2. Understand? Are you understanding? अगर मैंने बोला 2 और 5 के बीच का वैल्यू क्या है तो आप हम लोग क्या करते हैं, 2 plus 5 divided by 2. Is it not? If I tell you what is the middle value between 5 and 11, so what you will do, 5 plus 11 by 2. तो वैसे ही हमने इन रैशनल नंबर्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2. So we will be having 1 by 2. So let us take the LCM. 5 2s are 10, 2 1s are 1, 2 1s are 2, then 2 5s are 10, 5 1s are 5. Then हमारा आंसर क्या आएगा, 1 by 2 into 2 plus 5 7, 7 by 10. So the answer will be 7 by 20. तो इन दोनों के बीच में कौन सा रैशनल नंबर आ गया, 7 by 20. अब हम लोग दूसरा रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिटवीन 1 by 5 and 7 by 20, देन बिटवीन 7 by 20 and 1 by 2. ये प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे, ऐड डिवाइड बाय 2, ऐड डिवाइड बाय 2, ऐड डिवाइडेड बाय 2. आई डिड नॉट राइट डिवाइड बाय 2 सो दैट यू वी अवॉइड दैट कंफ्यूजन. तो डिवाइड बाय 2 को हमने 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाय ये ऐड कर दिया. सो दिस इज द अदर मेथड. Is it fine? So the first one is very, very easy. Is it not? So you can use whatever you are comfortable in. Is it fine? अब दो important terms हैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए. You already know about it. For example, any number we add it with 0, we get the same number. And when we multiply any number with 1, we get the same number. So that is why this 0 is known as the additive identity. एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है. और 1 को बोलते हैं आइडेंटिटी, 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इज इट फाइन? यस, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. So these are the two terms, 0 being the additive identity, 1 being the multiplicative identity. So one very common type of questions, one very important and common type of question which is asked in the exam is regarding additive inverse. अब ये additive inverse क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला 2 by 5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो हम लोग लिख देंगे -2 by 5. जो भी रैशनल नंबर है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख देना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिख देना. अगर उन्होंने बोला -7 by 5 तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 7 by 5. अगर 4 by 10 है तो -4 by 10 है. So just we are changing the sign, but children get confused in the exam.
कि क्या था एडिटिव इनवर्स. तो जस्ट रिमेंबर, if there is a rational number p by q, the additive inverse will be minus p by q. That's it. Yes. So that is a very important terminology, and there is one more important concept which is coming up, that is multiplicative inverse. Multiplicative inverse. Multiplicative inverse क्या है कि कोई भी नंबर है जैसे p by q है, तो उसका रेसिप्रोकल विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो इसका q by p हो जाएगा. ठीक है, जैसे 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो 5 न्यूमरेटर हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर हो जाएगा. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों बोलते हैं? जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 1. Is it fine? For example, they say what is the multiplicative inverse of -7/5? So multiplicative inverse में नेगेटिव है तो रिजल्ट में नेगेटिव रहेगा, आंसर में नेगेटिव रहेगा. And then 5 becomes in the numerator 7. So this is the multiplicative inverse. Don't get confused. ठीक है, बस additive inverse में positive है तो negative, negative है तो positive. Multiplicative inverse में if the question is in negative, the answer will also be in negative, except for the places of numerator and denominators are changing. Is it fine? So this is the end of your rational number. What did we do? Introduction to rational number, the properties, commutative, closure, associative, distributive, representation of rational number on the number line, additive inverse, multiplicative inverse. So just revise it. अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन जस्ट लेट मी नो, and make sure you are liking, sharing and subscribing. So we'll be back soon. Till then, have a happy week ahead and take care of yourself. Bye bye everyone. God bless you all.